Yeah. See, what we have done is यहाँ पे पहले we are just rewriting is T2 sin theta. यहाँ पे इक्वेशन क्या था, T2 sin theta is equal to T1. Sorry, T2 sin theta minus T1 is equal to 0. We got this equation. इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ मैं, T2 sin theta is equal to T1. वो लिख दिया मैंने. देन और क्या मिला, दूसरा इक्वेशन क्या मिला मुझे, T2 cos theta minus mg is equal to 0. So from that what can we write? We can write that T2 cos theta is equal to mg. अब इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लिया मैंने. रेशियो लेने से क्या होगा, इफ आई डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, देखो T2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो वी आर गेटिंग रिड ऑफ वन वेरिएबल. वी आर गेटिंग रिड ऑफ वन वेरिएबल और वन अननोन. तो क्या मिलेगा हमें, tan theta is equal to T1 by mg, or else T1 will be equal to mg tan theta. समझ आया ना, T1 will be equal to mg tan theta. T1 मिल गया हमें, we got T1. Then T2 कैसे मिलेगा, अब इक्वेशन तो है हमारे पास. देखो सेकंड इक्वेशन से आपको डायरेक्टली T2 मिल जाएगा. इनफैक्ट सेकंड इक्वेशन में क्या है, T2 cos theta minus mg is equal to 0. यानी T2 cos theta will be equal to mg and T2 will be equal to mg by cos theta. डायरेक्टली मिल जाएगा ना, आपको T1 सब्स्टिट्यूट करने का भी जरूरत नहीं है. डायरेक्टली T2 का वैल्यू T2 is equal to mg by cos theta मिल जाएगा आपको. यस, समझ आया ना. T1 क्या हो गया, mg tan theta. T2 क्या हो गया, mg upon cos theta. देखो मिल गए दोनों, राइट. थिंग इज अभी at the beginning it might appear difficult to you, but thing is ये क्वेश्चन को ना, this example can directly look at it and answer. मतलब कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं होगा. Can directly look at them. हाँ, y एक्सिस में T2 cos theta और mg दोनों बराबर होना चाहिए. So T2 cos theta is equal to mg. T2 is equal to mg by cos theta. T2 तो ऐसे देख के ही बोल सकते हैं. Then ये होना चाहिए कि T1 जो है it should be equal to T2 sin theta. T2 तो हमें mg by cos theta मिल गया. mg by cos theta into sin theta. तो mg tan theta हो जाएगा. ठीक है, that's it. Now if T2 is asked in terms of T1, तो कर लेना, क्या दिक्कत है. If T2 is asked in terms of T1, T2 is equal to mg by cos theta. mg के प्लेस में हमें T1 is equal to mg tan theta मिला. Using that equation क्या लिख सकता हूँ मैं, I can say that mg is equal to T1 by tan theta. 1 by cos theta already है यहाँ पे. Then T1 by tan theta, right? T1 by tan theta मतलब cos theta into tan theta will give us sin theta. ऐसा भी कर सकते हम. Yes, समझ आ रहा है ना. So it's always based on the equations. Equations निकालना होगा, solve करना होगा, that's it. ठीक है. समझ में आया ना सबको? कोई डाउट है? So the more number of problems you practice, the more better and the more clear it will be for you. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा. ठीक है. हाँ, कैसे भी अल्टीमेटली इट इज सॉल्विंग फॉर, कैसे भी सॉल्व कर लेना, you'll get the same answer. ठीक है. अच्छा ठीक है, we'll go into other problems and then those things will become much more clear to you. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, डीसी पांडे का एग्जांपल. I'll make use of that. थोड़ा मॉडिफाई करके बता देता हूँ आपको. वो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 वाला केस है ना, I'll go in that.
अच्छा ठीक है. Before I go into that, we'll go into the second case. Force equation का second case. Second case क्या है? Where acceleration is not equal to zero. Now acceleration is not equal to zero मतलब a bar क्या हो जाएगा? It will be equal to a x I cap plus a y j cap plus a z k cap, है ना? Similarly net force को भी ऐसे लिख सकता हूँ. Net force का भी x component, y component, z component सब कुछ आ जाएगा. Right? Now we know that net force जो है from second law, what is net force equal to? Mass into acceleration in terms of vectors, right? So x components भी equal होना चाहिए, y components भी equal होना चाहिए, z components भी equal होना चाहिए. यानी fx should be equal to m into ax, fy should be equal to m into ay, and fz should be equal to m into az. समझ आ रहे हैं सबको? Yes. Newton second law again अलग अलग axis पे we can make use of them individually, separately. ठीक है? जैसे हमने 2D motion में किया, we went for motion along x-axis separately, motion along y-axis separately, and motion along z-axis separately. The same thing will again extend to forces also. ठीक है? The acceleration along acceleration along x-axis will depend only on the forces along x-axis. Then acceleration along y-axis will depend only on the forces along y-axis, and the acceleration along z-axis will depend only on forces on z-axis. ठीक है? समझ आ रहे हैं ना? Yes. Okay, I'll go into cases, then आपको वो और clear होगा. Example मान के एक simple case ले लेते हैं. We'll take a simple case. यहाँ पे we have a ground, a smooth floor. Smooth का मतलब क्या होगा? Friction is equal to 0. We have a block. उसका मास मान के चले जाऊंगा. Let's suppose 2 किलोग्राम. मास जो है उसका 2 किलोग्राम हो गया. I'm applying a force towards right and force मान लेना 10 Newton. Force is 10 Newton. ठीक है? Now we'll go for the FBD. FBD और इसका FBD क्या होगा इसका? What will FBD be? क्या क्या force act करेगा इसके ऊपर? See, whenever you practice, draw FBD. If you do not draw FBD for each and every case, then it will be a huge mistake on your part. ठीक है? Basically, आगे जाके things will become much more unclear to you. Even if it is very simple case, initially draw the FBD. Once you get perfect with this, better, more comfortable with these problems, then कुछ cases के लिए you might neglect FBD, but again, FBD draw कर लो. Do not get overconfident. ठीक है? तो ये all these are the three forces acting on it. 10 Newton towards right, normal reaction upwards, mg नीचे की तरफ. Now, again, इसमें भी the forces are not along one direction, like one line. So obviously यहाँ पे 2D case हो गया. Right, so I can take upward as the positive y-axis, towards right as x-axis. Right? तो यहाँ पे acceleration obviously हमें पता है कि it will be pushed towards right, so acceleration जो है it will be towards right. A किस तरफ मान लिया हमने? A right की तरफ मान लिया. So we can go with along two different cases. जैसे if I go with along y-axis, along y-axis, what is the acceleration? Along y-axis, what is the acceleration or y component of acceleration क्या होगा? Ay क्या होगा? Along y-axis acceleration क्या है? Everyone. Along y-axis. Array, is it moving? Along the y-axis is the body moving. Not talk about x-axis. Along the y-axis is the body moving. Naina, it is continuously at rest along y-axis.
along y-axis it is continuously at rest. It is not moving upwards. It is not moving downwards. मतलब उसका velocity तो zero हो गया ना. उसका velocity along y-axis is continuously zero. There is no change in velocity. तो acceleration क्या होना चाहिए? Acceleration क्या होना चाहिए? It should be zero. समझ में आ रहा है ना? So look at the motion. Okay, you have to look at the motion. Motion की तरफ देखो. Motion में ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब क्या होगा? It is continuously at rest along the y-axis, or along the y-axis its velocity is constant, not changing. Right? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ay will be equal to 0, and if ay is equal to 0, then net force along y-axis will be equal to 0. Net force along y-axis will be equal to 0. Right? And if this is the case, then अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया तो नॉर्मल रिएक्शन तो पॉजिटिव. Then again you have to add all the forces, but add with proper signs. Then mg नीचे की तरफ mg तो नेगेटिव हो जाएगा, and that will be equal to 0, यानी n minus mg is equal to 0, और नॉर्मल रिएक्शन is equal to mg. तो इस केस में you can directly tell हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, बस खत्म. Yes, समझ में आ रहा है ना? Along y-axis normal reaction is equal to mg. Then I'll go along the x-axis. Along x-axis क्या होगा? Look at the along x-axis. Along x-axis कौन सा फोर्स है? एक ही फोर्स है ना? Normal reaction and mg का कोई component है क्या along x-axis? Normal reaction and mg do not have any component along x-axis. Only 10 Newton force है वहाँ पे. So 10 Newton towards right. Towards right हमने पॉजिटिव मान लिया तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा. Right? Condition क्या है? Net force will be equal to mass into acceleration. Right? 10 Newton along positive x-axis towards right, so 10 positive is equal to mass 2 हो गया. Acceleration यहाँ पे right की तरफ ही मान लिया हमने. अगर acceleration right की तरफ मान लिया तो क्या हो जाएगा? 2 into a आ जाएगा. a कितना आ जाएगा? 10/2, 5 meter per second square. ठीक है? कोई डाउट है इसमें? A very simple case, right? Direct case. Yes. Yeah, right. ये तो direct case था. अब we'll go into the other case. दो blocks कर लेंगे. We'll make 2 blocks. We'll make 2 blocks. Just a minute. अच्छा. We'll make 2 blocks. मान लेना force हो गया 10 Newton again. This of 2 kilogram, this of 3 kilogram. ठीक है? 2 kilogram and 3 kilogram. Do this, find out net acceleration, and यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा. Just tell what to do. आप कर लेना. Find acceleration, then normal reaction, on basically find all the normal reactions. Find all the normal reactions. Do it. साम्य क्या डाउट है इसमें? Along x-axis क्या डाउट है? What is your doubt along x-axis? Unmute and speak if you have this. Block 2 and block 3 बोल देना. Block 2 and block 3. Block 2 and block 3. Block 2 of 2 kilogram. Block 3 of 3 kilogram. ऐसे कर लो. See, along x-axis क्या है? We have this equation that net force is equal to mass into acceleration. Obviously, we are taking along x-axis, so x components लेना पड़ेगा. We take the x components. ठीक है? So along the x-axis, यहाँ पे look at the FBD. FBD देखो.
along the x axis what are the forces acting, मतलब x components क्या क्या है यहाँ पे. 10 Newton force will have an x component, whereas normal reaction and mg will not have any component. दोनों का कुछ component नहीं है. Right, so there is only 10 Newton force along x axis. Right, right की तरफ हमने पॉजिटिव मान लिया. देखो यहाँ पे y and x भी हमने कंसीडर किया. Right, so towards right is positive, so 10 Newton पॉजिटिव होगा, and जो acceleration हमने कंसीडर किया वो भी पॉजिटिव ही होगा because both of them are towards right. So Fx is equal to max. Fx के प्लेस में फोर्स के प्लेस में 10 न्यूटन आ जाएगा, so 10. मास हमने 2 लिया, so m is equal to 2. Ax is a towards right, positive, so a. That's it. So a is equal to 5 meter per second. 5 meter per second square. Yes. समझ में आया अभी? Right, so go for the second case. Now अब ये केस देखो. This example. So first thing you have to do is go for FBD. If we already know how the FBD will be, still I'll go into that. But उससे पहले मुझे बताओ यहाँ पे, will the block 2 and block 3 have same acceleration? That's the main case. Will the block 2 and 3 have the same acceleration? Yes or no? The answer is yes. Both of them will be moving simultaneously. They are going together. Right? Both of them are going together, so they will have the same acceleration. So I'll go for block 2 and block 3 individually. Let's suppose I have a left में, I'll take block 2. Block 2 के ऊपर क्या क्या फोर्स होगा? 10 न्यूटन फोर्स राइट की तरफ, 22g, 2 into mass. Gravitational force क्या होगा? mg. Mass is 2 kilogram, g is equal to 10, so gravitational force 20 Newton. इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लूंगा. यस, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2. और कोई फोर्स होगा? एक और फोर्स होगा ना यहाँ पे, I'll call it as N. The normal reaction on block 2 due to block 3. Yes, यही होगा ना FBD. For block 2 this will be the FBD. And यहाँ पे acceleration दिखाने के लिए acceleration towards right मान लेना. I'll take it as A. Yeah, the surface is smooth surface. ठीक है, smooth वाला, no friction. ठीक है, समझ आया ना अभी? Acceleration भी दिखा देना FBD में कहीं, और मतलब show it separately. This for 2 kilogram block. If I take the 3 kilogram block, 3 kilogram block के लिए क्या होगा? थ्री किलोग्राम ब्लॉक के लिए 30 न्यूटन नीचे की तरफ, राइट. ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन, I'll call it as N3. और कोई फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन N राइट की तरफ होगा, I'll take it as N itself. 2 के ऊपर भी N लिया, so यहाँ पे भी N लेना होगा. यस, एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? राइट की तरफ. यस, यही होगा ना? समझ आया ना? Now देखो, now if this is the case, अब हमें क्या करना पड़ेगा? To write down the equations. I'll take them separately. I'll just make a partition 1 and 2 का separately. Yeah. So look at block 2, left वाला case. Okay. Look at block 2. Block 2 में what are the forces acting? First of all, I'll take along x-axis and along y-axis separately. Okay, separately along x and y. So first take it along x-axis. Along x-axis, right की तरफ पॉजिटिव मान के जाएंगे हम. x is towards right, y is upwards. Along x-axis, what will the net force be? बता दो. Along x-axis, what is the net force?
क्या होगा? ओनली द नेट फोर्स along the x axis. नेट फोर्स क्या होगा? देखो राइट की तरफ पॉजिटिव मान लिया, so 10 is positive, n is towards left, so नेगेटिव होगा, so 10 minus n आ जाएगा. क्या आएगा? 10 minus n, राइट? समझ में आ रहा है ना? It will be 10 minus n. Yes. ठीक है. Then Fx is equal to mass into acceleration. तो यही नेट फोर्स 10 minus n is equal to mass, मास इसका 2 हो गया, एंड एक्सेलरेशन किस तरफ मान लिया हमने? टुवर्ड्स राइट, a. तो इस a पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन राइट की तरफ मान लिया, तो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या? इट विल बी पॉजिटिव, राइट? So 10 minus n is equal to 2a. रहने दो उसका, समझ आया ना? ये समझ आया सबको? Is this clear everyone? Yes. Then देखते हैं हम along y axis क्या होगा. यही y axis के along क्या होगा? ठीक है? Sorry, not y axis, my mistake. We'll take it along x axis itself. We'll keep it simple. We'll take it along x axis for block 3. बताओ तो क्या होगा? Along x axis, what forces are acting on block 3? What forces are acting? n हो गया राइट की तरफ, so n पॉजिटिव, राइट? एंड यही नेट फोर्स जो होगा, it will be equal to mass into acceleration. Fx will be equal to mass into acceleration. मास यहाँ पे उसका 3 किलोग्राम हो गया. एक्सेलरेशन राइट की तरफ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, सो a एंड a, तो क्या आ जाएगा? यही आएगा, राइट? समझ आया ना? नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं? n is equal to 3a. The sign is also very important. Sign convention is also very important. ये समझ आया ना सबको? This I'll call as equation 1, and ये जो equation I'll call it as equation 2. See, I hope all of you are writing down and doing this. Only when you write down and look at things, तभी आपको clear होगा. ठीक है? So 10 minus n is equal to 2a. That's the first equation. N is equal to 3a. It's the second equation. Yes. So from 1 and 2, or if I substitute 2 in 1, 2 को अगर 1 में substitute कर लूँगा तो क्या मिलेगा हमें? 10 minus n के place में 3a is equal to 2a, which is 10 is equal to 3a plus 2a, 5a, and a is equal to 2 meter per second square. Clear? आया समझ में? Yes or no? Yes. So we got acceleration of these two. दोनों का acceleration मिल गया, दोनों का same है तो दोनों का मिल गया. ठीक है? Now ठीक है? Then I'll go it along y-axis. Along y-axis, acceleration मिल गया, but we need normal reaction also. अच्छा ठीक है, एक मिनट. A मिल गया. We got A is equal to 2. So normal reaction between the two blocks. N का value क्या होगा? N is equal to 3a. N is equal to 3a. Look at equation 2. Equation 2 से क्या होगा? N is equal to 3a. A is equal to 2. So normal reaction कितना होगा? Let's write it here from 2. N is equal to 3a, which is equal to 6 Newton. ठीक है? एक नॉर्मल रिएक्शन मिल गया. नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 6 न्यूटन. आया समझ में?
Normal reaction between the two blocks is 6 Newton. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. Then again along y-axis, because देखो क्वेश्चन में क्या था, you had to find out acceleration and all the normal reactions. Acceleration निकाल दिया, normal reaction between the blocks निकाल दिया हमने. और कोई normal reaction है which is pending here? Is there any other normal reaction which we are missing here? Normal reaction because of the ground N2 and N3 वो missing है ना. Normal reaction because of the ground N2 and N3 they are missing. Yes, समझ आ रहा है ना. Then N2 and N3. If I go for N2 and N3, then I'll again go with this. I'll again make a partition separately for block 2 and block 3 along y-axis. Along y-axis, what is the acceleration? Block 2 के लिए मान लेंगे पहले. Block 2 के लिए along the y-axis, what is the acceleration? Along y-axis, acceleration क्या होगा? Got it? Is it moving along the y-axis? Along the y-axis, is the block moving? कोई भी block ले लो. I'm talking about the second block. मतलब ये left वाला. I'm talking about the left case. Left में क्या हो रहा है? It is not moving. Right? Ay is equal to 0. And net force क्या होगा? देखो N2 ऊपर की तरफ हो गया. N2 is upwards. तो N2 तो पॉजिटिव होगा. 20 is downwards. 20 क्या होगा? 20 will be negative. Yes, समझ आ रहा है ना. तो Ay तो 0 हो गया. And net force क्या हो जाएगा? Net force will be equal to N2 minus 20. ये समझ आया आपको? Yes or no? Right. So if we get Fy, then Fy we know that it is equal to m into Ay. Right. Fy क्या हुआ? Fy is N2 minus 20. That is equal to Ay तो 0 हो गया, 0 हो जाएगा. So N2 is equal to 20 Newton. Clear? समझ आया ना. देखो directly we can directly look at it and tell. हम इतना बोल सकते हैं कि along the y-axis acceleration 0 होना चाहिए. बस दो ही फोर्स है वहां पे, एक N2 ऊपर की तरफ, दूसरा 20 नीचे की तरफ. तो along y-axis net force 0 होना चाहिए. इसका मतलब N2 क्या होगा? N2 will be equal to 20. डायरेक्टली बोल सकते हैं ना. Yes. Now ये देखो for the block 3 मतलब RHS पे, the right hand one. Block 3 के लिए along y-axis what is the acceleration? Block 3 के लिए along the y-axis what is the acceleration? Block 3 के लिए along the y-axis acceleration is 0. Yes. अगर acceleration 0 है, then net force क्या हो जाएगा along y-axis? वो भी 0 हो जाएगा. अब along y-axis दो ही forces है वहां पे, एक N3 ऊपर की तरफ, दूसरा 30 नीचे की तरफ. So net force 0 होने के लिए N3 का वैल्यू कितना होना चाहिए? How much should N3 be? How much should N3 be? N3 should be equal to N3 should be equal to 30 Newton. Yes. समझ में आया ना सबको? Clear, right?
ठीक है. So I'll continue next class. I think we're out of time. मेरा एक और class है अभी 3:30 को. ठीक है. So start practicing. We'll continue next class. Okay. Chalo then. Bye everyone.